everyone and welcome to Skillbus. Today we'll go through a very interesting case study which is about Yahoo. हम सब जानते हैं कि Yahoo एक टाइम पर कितना फेमस था बट आज Yahoo नॉन एग्जिस्टेंट हो चुका है. तो ऐसा क्या हुआ था that a company which was so successful at one point of time is hardly talked about these days. Before starting, I would like to tell you that communication is one of the most important skills required to excel in any field. And in a professional field, it's important that we communicate in the best possible way. To help you with all that, Skillbuzz has launched a course on business communication. You can check it on the website. All the details are available along with the preview option. You can check this way on our website. You can scroll through the page. You can also check all the detailed syllabus along with the features provided. Do enroll in the course to improve your communication skills. It is highly recommended and I'm sure you'll enjoy it. Okay, so let's move forward to know the real story. So the period from 1981 to 2001 saw a boom in technology and scientific advancement which has shaped the world into what it is today. अब अगर हम देखें कि Yahoo was one of the first major tech companies. अगर आपको याद हो तो हम में से बहुत सारे लोगों की फर्स्ट ईमेल आईडीज याहू की थी. Now let's see how it all began. याहू को 1994 में डेविड फिलो और जेरी यांग ने मिलकर बनाया था. They both were electrical engineering students at Stanford University. उन्होंने जब अपनी ये वेबसाइट बनाई, उनका मेन मोटिव एक डायरेक्टरी क्रिएट करने का था कि हम www, which is the World Wide Web, उसको कैसे यूज करें. The company was earlier named as David and Jerry's Guide to the World Wide Web, but later, in 1994, it was renamed as Yahoo. In 1989, the www was invented by Tim Berners-Lee and it was somewhat new in the 1994, which helped Yahoo to become the most popular search engine. Yahoo को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला which means कि Yahoo बहुत पॉपुलर हो गया था सर्च इंजिन्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्च इंजिन्स बने ही नहीं थे तब तक. Yahoo की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको IPO बोलते हैं was valued at a whopping amount of $900 million in 1996. Yahoo ने बहुत जल्दी अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करा था. उनमें से दो कॉम्पिटिटर्स का नाम है Vista and Excite. The company invested a considerable amount of money in developing its web portal. The stock price of Yahoo rose by almost 600%, which is really a huge rise. Also, by 1998, Yahoo was valued at $40 billion and in 2000, it reached its peak and was valued at $125 billion. But friends, the glory did not exist for very long and the dot-com crash came. इस dot-com crash की वजह से prices बहुत ज़्यादा गिर गए थे. However, Yahoo survived, but the point is कि कंपनी ने सिर्फ survive किया और flourish नहीं. In 2002, Yahoo's valuation came down to just $10 billion. Microsoft ने 2008 में फिर ऑफर किया याहू को कि वो एक्वायर करना चाहते हैं कंपनी फॉर एन अमाउंट ऑफ $44.6 billion, बट याहू रिफ्यूज्ड एज इट फेल्ट द अमाउंट वाज लो. याहू ने फिर 2012 में मैरिसा मेयर को CEO अपॉइंट किया इन एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अ लाइफलाइन, बट इट फेल्ड. आप सबको बहुत ज़्यादा अमेजमेंट होगी ये जानकर कि फाइनली याहू वाज सोल्ड टू वेरिजॉन इन 2016 फॉर जस्ट $4.8 billion. जब ये डील हुई थी याहू और वेरिजॉन के बीच में, उस टाइम पर फोर्ब्स ने इस डील को एक नेम दिया था एंड द नेम वाज द सैडेस्ट $5 billion डील इन टेक हिस्ट्री. So you must be thinking that what went so wrong with the company? I think it's not $1 million but $1 billion question. So the first mistake was that Yahoo was launched at the time when www was relatively new. Yahoo was the most popular web portal for a brief period and generated a steadily increasing stream of revenue through advertisements. कंपनी ने जो उनकी नीड थी उसे ओवरलुक किया एंड उन्होंने अपना इंजीनियरिंग बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया, विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम एज इट इज द बैकबोन ऑफ एनी टेक कंपनी. The second bad decision was letting the opportunities of acquiring companies like Facebook and Google just pass by because of minor technicalities.
What makes a company is able to look into the future and being able to judge which deals would benefit the company and which deals would bring losses. Even in 1998, Google के owners ने Yahoo को approach किया था that they wanted to sell Google to Yahoo for just $1 million, but Yahoo's owners wanted them to reduce the price and thus the deal was not made. Yahoo ने इवन फ्लिकर को परचेज किया बट उसे ठीक से मेंटेन नहीं किया. अगर याहू ने फ्लिकर को अच्छे से मेंटेन किया होता तो आज मे बी इंस्टाग्राम की जगह हम फ्लिकर यूज़ कर रहे होते. और याहू टाइम से बहुत आगे था और उन्होंने नियरली हर डोमेन में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया था. बट मेन ड्रॉबैक वॉज दैट इट डिड नॉट कैपिटलाइज ऑन इट्स अर्ली लीड्स विच लेफ्ट द फील्ड्स टू बी डोमिनेटेड बाय लेटर एंट्रेंट्स. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. द फर्स्ट इज याहू ब्रीफकेस. याहू ने क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स एटसेट्रा से बहुत पहले लॉन्च कर दिया था बट हम में से हार्डली कोई जानता है इस फीचर को. द नेक्स्ट इज broadcast.com which later turned into Yahoo TV was launched well before YouTube. Before Instagram, Flickr was there. Before Evernote, there was Yahoo Notebook. And friends, you won't believe that it also made a product called Yahoo Music well before Spotify. You'll also be surprised to know that Yahoo pioneered the pay-per-click advertising model. Now, the third mistake which the company made was that it forgot where it came from. Instead of developing its core products, the company focused on advertising to grow revenue. Yahoo started acquiring other companies instead of focusing on itself and thus failed on both frontiers. Google search was far superior to Yahoo search. Google was superior to Yahoo Mail. Even Quora याहू के आंसर से पहले डिस्प्ले होने लगा. हम ये बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि याहू एक मास्टरपीस था, लेकिन उनके डाउनफॉल का मेन रीजन सिर्फ ये था दैट द ओनर्स कुड नॉट रन द कंपनी प्रॉपर्ली. ऑल्सो हम सीख सकते हैं याहू से कि दैट यू शुड नेवर फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम एंड नेवर बाइट ऑफ मोर दैन यू कैन च्यू. And maybe if Yahoo could have understood this well in time, then we must not be surprised that it could have been ahead of Google today. I hope you all liked the video. Also, do let me know in the comment section that which other company story you wanna know. Thank you for watching.